Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with first news topic list. Today is 28th of January. The first topic is India Central Asia Summit. We'll see some of the important outcome of this summit. Second, vaccine got conditional market approval. Some of the vaccine has been approved. We'll see the detail about this as well. Third, Russia see rooms for dialogue with the United States. The dispute, or you can say the ideological difference between US and Russia is on a toll rising amid the Ukraine crisis. Second last is sharing the cadre. This is an editorial, right? We have two editorial a day. This is the first editorial from Indian Express. The other editorial is from the Hindu, that is Indian economy and challenges pertaining to informality, right? Apart from this, at the end of this video, there would be some MCQ based questions. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And just to tell you about the new courses of the prelims test series, this was commencing from 28th, that is from today. The 38 sectional test, 5 previous year questions, 7 monthly current affairs, and 10 full length tests will be there. So you can check the benefit out there. मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से ले सकते हैं. And you can register yourself. Along with this, you will get the IAS gazetted monthly subscriptions also. Starting with the first news, that is India Central Asia Summit. This particular news is important for General Studies Paper 2. Bilateral regional grouping and agreement, evolving India's and affecting India's interest. I have discussed this news previously also, but today we are more concerned about the outcome that has taken place in this summit, right? So recently, as we know, the first India Asia Summit, which was held virtually, and this marked the 30th anniversary for the establishment of diplomatic relations between India and all other 5 Central Asian countries, which include Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. तो इन सारे कंट्रीज के प्रेसिडेंट थे और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, he hosted the meeting. So including this 5 country plus 1 India was there. So total 6 members have attended this India Central Asia Summit. Now, decision has not been taken, जहाँ पे institutionalize करने की बात की गई है, and even the consensus was made कि ये जो अब मीटिंग है इंडिया सेंट्रल एशिया समिट की, वो हर 2 साल के इंटरवल पे होगी. Every 2 year, after 2 years, there would be a meeting that would be held between India and Central Asia. So this summit would continue for a longer duration. Now the summit is a symbolic importance of the attachment. यहाँ पे leaders जो हैं दोनों साइड के हैं, they have discussed the comprehensive issues with regards to India and Central Asia partnership, which is again very important for India as well and for all other Central Asian countries. Now consensus हुई है inclusive government in Afghanistan को लेकर. We have seen the change in the government amid the overtaking of the government by Taliban. Some of the consensus was there. तो लीडर्स ने डिस्कस किया है जो करंट सिचुएशंस है अफगानिस्तान में, एंड इवन द इम्पैक्ट देयर इम्पैक्ट ऑन सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, बिकॉज अफगानिस्तान इज अ कंट्री विच इज विटनेसिंग द शार्प डिक्लाइन इन बेसिकली एम्प्लॉयमेंट. वहाँ पे हाई एम्प्लॉयमेंट रेट है, लोगों की भुखमरी की शिकायत हो रही है. इवन पीपल आर नॉट हैविंग सम सफिशिएंट अमाउंट वेयर दे कैन get the livelihood options, right? So these are some of the repercussions after the Taliban has overtaken the government. So they reiterated about the strong support for the peaceful, secure and stable Afghanistan, because एक democratic setup, एक institutional setup की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Now India and Central Asian countries has noted that the regional consensus जहाँ पे अफगानिस्तान में एक true representation हो, this is first and foremost the priority for India and Central Asian countries, and the other major aim जो दूसरी सबसे important aims होंगी गवर्नमेंट की, खास करके इंडिया और सेंट्रल एशिया कंट्रीज की, दैट इंक्लूड इंक्लूसिव गवर्नमेंट, एक अफगानिस्तान में प्रमोट की जाए, combating terrorism and drug trafficking, which is on a higher side, that should be reduced. Role of United Nations, providing immediate humanitarian assistance, जो women's है उनको भी मेन वर्कफोर्स में, मेन स्ट्रीम्स में जगह मिले, इक्वलिटी फॉर जेंडर हो, एंड इवन द प्रोटेक्ट राइट फॉर वुमेन्स,
children, and the national and ethnic minority group. These should be given a proper representation in the country like Afghanistan. Now, focus on connectivity and trade. This is also a point that was discussed. So, India और Central Asia के members ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसफर कॉरिडोर ऑल्सो नोन एज INSTC इस पे बात हुई एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैव ज्वाइंट टुगेदर जहाँ पे वो कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए ट्रेड को बूस्ट करने के लिए और इकोनॉमिक कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए एक साथ काम करेंगे सो दिस इज अ joint cooperation that would be led by India as well as other Central Asian countries. So they welcome the proposals and even they have called that जो Chabahar port है, even the country would be having this benefit that they can access the free movement of goods between India and Central Asian countries. Now, importance of Tapi pipeline was also discussed on this meeting. So, Turkmenistan has announced that it would renew a push जहाँ पे long term जो तापी project है उसको start करने की बात की गई possibly by March and discussing the prospects with the Taliban region in Kabul, right? And Taliban government has also said that it is deploying almost 30,000 of their troops to carry out work in the Tapi gas pipeline. तो इस तरह की जो मैनफोर्स सपोर्ट है या जो मैकेनिकल सपोर्ट्स हैं उसके लिए भी तालिबान गवर्नमेंट ने एग्री किया बट वी हैव टू सी in due course of time how this is happening. Now the other news that is vaccine get conditional market approval. This particular news is important for General Studies paper 2, issues related to development and management of health. So जो सबसे बड़ी नोडल बॉडी है इंडिया की with regard to drugs that is Drug Controller General of India DCGI. They have recently approved the conditional market authorizations. This is also known as CMA. जो conditional market authorizations हैं वो दो vaccines को दी गई है. The first is Covishield which is being manufactured by the Serum Institute of India and other is Covaxin which is manufactured by Bharat Biotech. Right? So ये दो vaccines हैं जिनको अभी जो नई ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल रूल्स है 2019 आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द conditions and norms and procedures, the Drugs Controller General of India has approved for the conditional market authorizations. Right? We'll understand what is conditional market authorization also. So DCGI ने कहा है that they have asked the manufacturers to submit the data with regards to COVID-19 every 6 months. Right? किस तरह से performances चल रही है तो एक review हर बार ली जाएगी every 6 month के interval पे. And the regulator has upgraded the permission for Covaxin and Covishield to restrict their emergency use situation जहाँ पे normal drugs की permission अब adult populations को दी जा सकती है on a prescribe on a doctor prescriptions only, right? Now what is conditional market authorization? जो CMA है वो क्या होती है actual में and how does it work? So conditional market authorization is a category जहाँ पे market authorizations के लिए emergency के टाइम पे खास करके pandemic के टाइम में ये चीज़ें दी जाती थी. So in this context, the current market authorization is a new category of market authorization that has emerged during the pandemic, right? और अभी तक till date जो Serum Institute of India जिन्होंने कोविशील्ड बनाई या फिर भारत बायोटेक है जिन्होंने कोवैक्सीन बनाई है, they would be made available for the emergency use authorization and even टू सम एक्सटेंट खास करके अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस पे ये मार्केट से भी ली जा सकती है. उसके और भी अभी क्लैरिटी आनी है. वी डू नॉट हैव दैट इंफॉर्मेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ एज टू वैक्सीन्स मीट द हाई स्टैंडर्ड सेफ्टी इफेक्टिवनेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी की बात करें अंडर द ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट 1940, सो दिस इज द एक्ट विच इज रेगुलेटिंग ये दोनों वैक्सीन्स को कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशंस के लिए अप्रूवल दी गई है. एंड द अप्रूवल पाथवे थ्रू दिस रूट वुड बी फास्ट ट्रैक जहाँ पे जो कंडीशंस होंगे एक्सेस टू फार्मास्यूटिकल फॉर मीटिंग द ड्रग्स रिक्वायरमेंट वुड बी प्रोवाइडेड. राइट, अगेन देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस एंड कंडीशंस. नाउ अगर बात करें यूएस की फूड और ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द यूएस FDA, दे हैव ऑल्सो इशूड द अप्रूवल फॉर सम ड्रग्स. वहाँ के जो हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसीज हैं या फिर यूके की अगर बात करें दे हैव ऑथराइज फाइजर एंड एस्ट्राजेनेका फॉर द कोविड-19 वैक्सीन. तो इस तरह की जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस है दैट इज टेकिंग प्लेस नॉट ओनली इन इंडिया बट अदर इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्रीज like developed countries like United States and even Britain. Now the other news that is Russia see rooms for dialogue with United States. This particular news is important for General Studies paper 2, effect of policies and politics for developed and developing countries. So what recently has happened that
Russia has recently said that United States और उनके जो allies हैं, they have failed to address the main concern over the NATO eastward movement. और अभी भी एक रूम फॉर डायलॉग है जहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, जो यूक्रेन की बॉर्डर की इश्यूज है, जहाँ पे अभी रशिया ने भी अपनी रिसेंटली काफ़ी डिप्लॉयमेंट की है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, उसको लेकर के बात की जा सकती है. आई एम डिस्कसिंग दिस न्यूज़ लाइक फ्रॉम लाइक द पास्ट 2 days, तो इसकी डिस्कशन हो रही है, बट अभी कोई इसमें ऐसी डेवलपमेंट नहीं है जिसको और डिटेल में डिस्कस की जाए. So US and NATO has formally responded to Russia's demand with security guarantee in terms of Europe offering engaging in the diplomacy is concerned. And even Russia has said कि NATO को ये promise करनी पड़ेगी कि वो यूक्रेन को NATO के अपने allies में शामिल नहीं करेगी. So this was some of the guarantees or insurance that was being demanded from the Russia. But US has also reiterated that in such instances it would never ban Ukraine from entering any countries in central और इन द ईस्टर्न यूरोप ज्वाइनिंग द अलायंस. तो रशिया ने, यूएस ने भी ये क्लियर किया कि वो इस तरह की कोई सैंक्शंस या कुछ इस चीज को लिमिट नहीं करेगी यूक्रेन के ऊपर. दिस इज यूक्रेन प्रेरोगेटिव दैट वेयर दे आर गोइंग. नाउ यूएस हैज टॉक अबाउट इकोनॉमिक सैंक्शंस दैट कैन हैव. सो वेदर power or even threatening of Ukraine crisis, it says that if Russia invade Ukraine, there would be economic repercussion. वो बहुत सारी उसकी कंडीशंस हैं जो यूएस ने मेंशन की हुई है. एंड इवन वेस्टर्न डिप्लोमेट्स आर रिफ्यूजिंग टू एक्सप्लिसिटली टॉक अबाउट keeping Russia and maximizing their deterrent effect. So definitely Russia would have their economic repercussion if something is taking place. And to my best knowledge, I understand Russia कहीं ना कहीं इस चीज़ों के लिए तैयार है कि हमें economic sanctions और repercussion झेलने पड़ेंगे. Now, sharing the cadre, this is the first editorial. There are 2 editorial a day. The first editorial that I'll be discussing is functions and responsibility of union state and challenges pertaining to the federal structure. आज के न्यूज़पेपर में 2 ऐसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल थे जो आपके लिए समझना जरूरी है. So the first one is sharing the cadre. So what I'm going to discuss under this editorial, the first would be cadre strength and deputations, जो स्टेट के कंसर्न्स है वो, conclusions. And the entire editorial talks about the cadre management and challenges. So recently, जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, ये कहा गया that गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रपोज सम अमेंडमेंट टू द ऑल इंडिया सर्विसेज रूल, जहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर की शॉर्टेजेस हैं, इवन ऑल इंडिया सर्विसेज की जो शॉर्टेज है उनको फुलफिल की जाए. सो द चेंजेस हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 6(1), राइट. दिस इज अंडर ऑल इंडिया सर्विसेज रूल 1965, राइट. तो दिस इज अंडर 1965. ये रूल्स में चेंजेस ली गई है जहाँ पे सेक्शन 6 के अंदर उसको अमेंड किया गया और स्टेट की कंसेंट को मैंडेटरी नहीं किया गया, राइट. सो अंडर द करंट डिस्क्रिप्शन ऑफर जो ऑफिसर्स है वो सेंट्रल डेपुटेशन पे आ सकते हैं वॉलेंटरली. स्टेट की कंसेंट मतलब वीटो नहीं हो सकती है, स्टेट के लिए स्टेट की अप्रूवल भी जरूरत पड़ेगी, बट द वीटो वुड नॉट वर्क. सो दिस इज द बेसिक अमेंडमेंट. नाउ द सेंटर देन मेक अ सिलेक्शन अमंग द ऑफिसर्स विच दे फील लाइक नियर फ्यूचर्स में उनकी जो ज़रूरतें हैं वो स्टेट्स को पहले अपनी रिक्वायरमेंट भेजते हैं, और जो स्टेट कार्डर से जो लोग सेंट्रल डेपुटेशन में जानी होती है उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है ताकि फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो उनको वहाँ पे डेप्यूट किया जा सके. Now once the selection is finalized, एक ऑर्डर इशू की जाती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर ऑफिसर को रिलीव करती है, एंड इवन यू कैन से दे गिव एनओसी टू द सेंट्रल डेपुटेशंस. Now each state has certain quota जहाँ पे ऑफिसर्स उससे ज़्यादा सेंट्रल डेपुटेशंस पे नहीं भेज सकते. एक लिमिटेशंस है. जो कार्डर मैनेजमेंट की जाती है, जो कार्डर मैनेज होती है, वो प्रेजेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वहाँ पे प्रेजेंट, और जो सेंट्रल डेपुटेशंस पे जाने वाले हैं उन दोनों को मिला करके टोटल स्ट्रेंथ बनती है, राइट. इन लास्ट डिकेड ये देखी गई है देयर हैज बीन ग्रेजुअल डिक्लाइनिंग इन द ऑफिसर विद द सेंट्रल डेपुटेशन, राइट. नाउ कार्डर स्ट्रेंथ और डेपुटेशंस की अगर बात करें, जनरली जो टोटल कार्डर मैनेजमेंट होती है दैट इज अराउंड 20 to 30% for the central deputation, right? In 100, 20 to 30% would be used. 20 to 30% would be used for the central deputations. Now, currently, less than 10% are working in various of central ministries. Accordingly, अगर बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे जो नंबर है वो वेरी करती है 15% तक, बिटवीन 8 to 15%. द टोटल कार्डर स्ट्रेंथ और उनके जो डिप्लॉयमेंट है सेंट्रल डेपुटेशन की तरफ वो 8 से 15% के आसपास है. ना अब इसी रूल को चेंज करने के लिए जो शॉर्टेज हो रही है खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट में, उस चेंजेस को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेकर के आई है, बिकॉज जो शॉर्टेजेस हैं ऑफिसर को उनको फुलफिल किया जाके अंडर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल पे, एंड देयर इज करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द स्टेट्स टू, राइट.
तो स्टेट की भी अपनी ये जिम्मेवारी है कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे तरीके से हैंडल करे, और हर एक बड़े लेवल पे ऑफिसर्स को सेंट्रल डेपुटेशंस पे भेजने पे भी उस स्टेट की जो गवर्नेंस प्रोसेस है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट होगी, राइट। नाउ स्टेट की अपनी कंसर्न है, दे हैव क्लियरली अंडरस्टूड दैट जो ऑफिसर्स हैं जो सेंट्रल डेपुटेशंस पे जाना चाहते हैं, वो डिसीजन सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की नहीं होती है, एक इंडिविजुअल की भी होती है, एक इंडिविजुअल चॉइस भी है। एंड इवन इफ द स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव, सेंट्रल उनको डेप्यूट करती है। दिस टेक देयर ओन रिक्वायरमेंट ऑन द स्टेट्स एंड ऑफर नेम फॉर द जो ऑफिसर्स जाना चाहते हैं, उनकी एक पहली लिस्ट तैयार की जाती है और डीओपीटी को भेजी जाती है दैट दीज ऑफिसर आर इंटरेस्टेड टू वर्क विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ दिस ऑफिसर, जो सेंट्रल डेपुटेशन है वो फर्दर कैरी फॉरवर्ड होती है एंड सेंटर वुड हैव नो रोल टू प्ले। तो यहाँ पे खास करके जो स्टेट की कंसर्न है वहाँ पे ये कहा गया है कि जो डिप्लॉयमेंट या फिर जो लिस्ट तैयार होती है उसमें स्टेट की कोई रोल, खास करके जो सेंट्रल की उसकी कोई रोल नहीं होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जो कि डेप्यूट होना चाहते हैं सेंट्रल डेपुटेशंस पे। Now, if it wishes, officer may work and suggest to the states, and if both the center and the state agree, वही officers को central deputations में उनको allocate की जाता है, और जब उनकी deputations पूरी होती है एक tenure के बाद, then they return back to the home cadre. And past experiences show that the exercise of power by the center can be counterproductive. इस तरह के जो decision लिए गए हैं जहाँ पे amendment लाई गई है वो state और खास करके जो center है उनके बीच में जो cadre management है system है उसको कहीं ना कहीं impact करेंगी। What is the conclusion? See, first and foremost, जो proposed amendment है that suggests a mechanism where meeting for the shortages of officers is required, और उसके लिए necessary provision की गई है, but definitely the center will have the shortage in terms of deputy and secretary level in coming years. तो उसको fulfill करने के लिए अभी से government ने ये process की है, but it should look at the meeting, जो gaps हैं उनको senior public sector officers से भी fulfill किया जा सकता है या फिर उनको वापस depute करके ministries में भी रखी जा सकती है। And many of them are highly qualified, they can meet the requirement of secretarial work in the couple of years. This is what the suggestion has been suggested by the editor in this editorial. Now the other editorial, that is India's economic and challenges of informality. This particular editorial will be important for General Studies paper 3, inclusive growth and issues arising from it. So under this editorial I'll be discussing three important subheads. The first is the structural change, second is periodic labor force survey, and third is the RBI reports. And the entire editorial talks about Indian economy and the challenges. So बात करें 2016 के टाइम से गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी सेवरल फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की, जहाँ पे ये कोशिश की गई गवर्नमेंट की तरफ से कि इकोनॉमी को फॉर्मलाइज किया जाए. So in that particular context, government has come up with currency demonetizations, inductions of goods and services tax, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, digitalization of financial transaction, and all this enrollment in the informal sector was taking place, and it encourages the formalization of economy. तो यहाँ पे इस context में questions पूछी गई है that why formalization of economy was necessary. Now India में जो टैक्स रिफॉर्म की अगर बात करें, it has actually initiated in 1980, right? So 1980 में टैक्स रिफॉर्म स्टार्ट हुई and India has attempted to promote employment. So पोस्ट लिबरलाइजेशन या फिर बात करें ग्लोबलाइजेशन के बाद इस तरह की चीज़ें बढ़ी है, बट डेफिनेटली टू प्रोटेक्ट द इंटरप्राइजेस, लेबर इंटेंसिव जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको एक फिजिकल कंसिडरेशंस के साथ उसको रेगुलेट करने के लिए इंडस्ट्री ने भी लाइसेंस देनी स्टार्ट की. एंड सच मेजर्स लीड टू द लेबर इंटेंसिव market where the formal and informal sector has taken a toll in our country. Now, what are the structural changes that is ongoing? अगर बात करें East Asia की, apart from India, China and Japan, these countries have seen the structural changes in the second half of 20th century, जहाँ पे पुअर एग्रेरियन इकोनॉमिक्स जो है वो रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ी, एंड इवन टू सम एक्सटेंट लेबर ट्रेडिशन एंड एग्रीकल्चर हैज ग्रोन अप, राइट. तो जैसे मैंने आपको बताया 1990s के बाद इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही हुई थी, राइट, बिकॉज वी हैव सीन FDI, liberalization, globalization effort taking place at their full potential. However, in many parts of the developed countries, including India, जो formality है that has reduced to very sluggish place. And even most visible urban या फिर जो poverty या फिर unemployment है, this has been also increasing parallelly. जहाँ एक तरफ growth हो रही है वहाँ पे ये भी ratios proportionately बढ़ रही हैं. And even during the pandemic, it has enlarged to a larger extent. Now, just looking at the periodic labor force survey, यहाँ पे ये बताई गई है that despite
witnessing the rapid economic growth. In last 2 decades, 90% of the worker in India have remained informally employed और ये contribute करते हैं production से total GDP उसके half of productions में GDP के total. So why the question arises, why these were not the part of the formal economy, right? अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी थी तो इन लोगों को फॉर्मल इकोनॉमी में कन्वर्जन क्यों नहीं किया गया? And even it says that periodic labor force survey shows that 75% of the informal worker are self-employed and casual wage worker with average earning at the regular salary is less. तो जो एक एवरेज रेगुलर सैलरी है उससे कई कम इनफॉर्मल वर्कर्स के लोगों को पैसे मिलते हैं. Significantly, the prevalence of informal employment is widespread in non-agriculture sectors also. So this is some of the evident fact that is coming from the periodic labor force survey. And about half of the informal worker have engaged in non-agriculture sectors, जहाँ पे spread ये देखी गई है कि both rural और urban area में ये culture अभी भी continued है, that is existing. Now, what is SBI report in this regard? So the State Bank of India has recently reported कि जो economic formalizations है वो rapidly पेंडेमिक की वजह से भी उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है. विथ इनफॉर्मल सेक्टर की जो जीडीपी है शेयर में वो भी श्रिंक हुई है, दैट इज लेस देन 20% एंड अबाउट 50% अ फ्यू ईयर अगो. एंड डिस्पाइट एफर्ट्स ऑफ फॉर्मलाइजेशन, ये चैलेंजेस जो है जो इनफॉर्मलिटी की इंडिया में जो चैलेंजेस दैट इज लूमिंग टू अ लार्जर एक्सटेंट. सो गवर्नमेंट इन दिस बजट नीड टू लुक इनटू दिस कि खास करके जो एमएसएमई या फिर जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको फॉर्मलाइजेशन की तरफ लॉन्गर ड्यूरेशंस में या फिर लॉन्ग टर्म मेजर्स पे कैसे इंक्लूड की जा सकती है. And even the novel coronavirus pandemic has accelerated the challenges. So this would be something a Herculean task for the government to assess the problem and even provide a roadmap that this in the longer run could get a possible solutions. Now moving to the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday question. For first question, the correct option is A. For second, the correct option is C. Today's MCQ about Marry India Summit. The focus is to upgrade infrastructure and India aim to strengthen the vision of Atmanirbhar Bharat. Denmark is a partner country with 3-day summit. So if you have read this, do check out what is the correct answer. I will move to second question of the day. Swachhta Sharthi Fellowship. The Government of India under Waste to Wealth Mission has launched Swachhta Sharthi Fellowship. The Waste to Wealth Mission is the 9th national mission to Prime Minister Technology Innovation and Advisory Council. So you have to filter out the correct option. If you have not read this, do check it out because these type of government programs and policy would be something that would be important for examination. So this was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.